So, first of all, before I begin with the discussion, I first of all want to, give some idea about how to address current affairs, especially when we are talking about the prelims exam now with respect to polity. Okay, this is in general true for most of the other subjects also. But when we talk of polity, I am just talking about polity over here. See, you have to understand that in current affairs, when we look at prelims, for polity part, you don't have lot of additional information coming from current affairs, which becomes very important in the prelims exam. Okay? Mostly things which we study in the static part, that is, we study about the say Supreme Court or High Court and their powers. We study about the legislature, parliament, the different procedures in parliament. Then we study about the different powers and provisions about the executive, president, governor, etc. Whatever we study as a part of our static part in polity, things which are happening in current affairs, things which are reported in newspapers on those issues, they become important for us in current affairs in polity. Okay? So, almost I would say 70 to 80% of the content which we study as a part of current affairs in polity is basically just to see what has been in news from the static part, so that we are able to be very clear with what is the factual position, what is the legal position about them. And secondly, we do get some additional information in polity as a part of current affairs, primarily from new laws or bills which are passed or which are proposed, or important judgments of courts which have given some new provisions. These are probably the only two sources from where you get new information coming in polity. Otherwise, most of the things are a static part which is being reported in newspapers. We just have to highlight कि हाँ ये चीज important थी static part में, and that we have to be more concerned about when we look at the prelims exam. So I hope you get this idea very clearly. So first of all, we are looking at the part 1. We had a very important judgment on the reorganization of Jammu and Kashmir into UTs. Okay? Remember, in 2019, what had happened? Article 370 was abrogated. Okay? One important development was that Article 370 was abrogated. Now, this is not very important now, because Article 370, आपको इतना याद रखना है, what was mentioned in the constitution was that Article 370, it could be abrogated by a presidential order, provided that Constituent Assembly of Jammu and Kashmir gives its consent. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एब्रोगेशन को सही बताया. सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट एब्रोगेशन. इट हैज फाउंड दैट द पार्लियामेंट वाज कंपिटेंट टू गिव कंसेंट टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इवन व्हेन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली वाज नॉट देयर. ठीक है. सो हमारे लिए अब आर्टिकल 370 कोई रिलेवेंस नहीं रखता है. सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द एब्रोगेशन. हाउ इट वाज हाउ इट वाज एब्रोगेटेड, हाउ इट वाज रिमूव्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर. तो आर्टिकल 370 रिमूव कैसे किया गया था वो हमें याद रखना है. It was abrogated by presidential order. So article 370 में ही provided था कि president के order से उसे खत्म कर सकते हैं. ठीक है. So it was abrogated through a president's order, and followed by consent of parliament. अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे पार्लियामेंट ने क्यों किया ये. पार्लियामेंट ने इसलिए किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कोई कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी और वहां जो असेंबली थी वो भी डिसॉल्व्ड थी. तो इसलिए ये काम पार्लियामेंट ने किया. सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट पार्ट ऑफ द यू कैन से एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट. सो हमारे लिए बस इतना ही याद रखने की जरूरत है अब आर्टिकल 370 पे. नथिंग मोर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. ठीक है. नाउ व्हाट इज रेलेवेंट ओवर हियर इज दैट पार्ट 1 में आप सबको पता है एक आर्टिकल है आर्टिकल 3. All of you know there is an article 3 in the constitution which talks about reorganization of the country into states and UTs. ठीक है. Reorganization of the country into state and UTs. Article 3 it provides the procedure and power for that. So Jammu and Kashmir जब ये एक्शन लिया गया 5th August 2019, on this day 2 important steps were done about Jammu and Kashmir. One was 370 was removed. The other was Jammu and Kashmir was divided into 2 union territories, that is Ladakh and Jammu and Kashmir. So वो जो डिवीजन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का वो कैसे किया गया? बाय पासिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. ओके. सो आर्टिकल 3 इट प्रोवाइड्स द पावर एंड प्रोसीजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है. It provides the power and procedure for reorganization of the country.
नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इस, आई मीन इट हैज बीन इन लॉट ऑफ न्यूज. One, because of Jammu and Kashmir's judgment coming in Supreme Court. Two, because there was an amendment brought in the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में बांटा गया था. उसमें अमेंडमेंट करके अभी जम्मू एंड कश्मीर में सीटें बढ़ाई गई हैं. प्लस इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज सम रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर एसीज एंड एसटीज एंड रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, सो डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स. तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई वी नीड टू फोकस अपॉन दिस. ओके, so now what I was trying to say is article 3 is very important for us. You have to understand article 3 properly, क्योंकि article 3 पर ही जम्मू एंड कश्मीर का पूरा रिऑर्गेनाइजेशन का इशू था. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है. इससे फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है. सो आर्टिकल 3 फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्स अबाउट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है. First information we need to remember is here state includes UTs. ठीक है. It means that we can create a state, we can create a UT also. We can convert a state into a UT, we can convert a UT into a state. Everything is possible using Article 3. So जम्मू एंड कश्मीर का जो reorganization हुआ वो Article 3 का यूज करके हुआ. So reorganization of Jammu and Kashmir Act 2019. This was the law which was passed in 2019. ठीक है. इस लॉ से जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया. सबसे पहले JNK, इट वाज डिवाइडेड इनटू JNK UT एंड लद्दाख UT. ठीक है. पावर कहां से आया? आर्टिकल 3 गेव द पावर. Article 3 gave the parliament the power to convert Jammu and Kashmir from a state into 2 UTs. ठीक है. So it talks about reorganization of the states into UTs. This is clear to everyone? Now, what is the procedure for that? Proposal for reorganization may be introduced in either house of parliament. ठीक है. तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. प्रपोजल फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है. बट कंडीशन क्या है? 2 कंडीशंस हैं. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन is required. President's prior recommendation is required. President's prior recommendation is required. Okay. What is the second important condition? President shall seek the opinion of the state legislature concerned from within a time specified by president. So I hope ये static part का information है. I am emphasizing this just to ensure that you are recalling this. Okay? ये आप static part में किसी भी note से आप पढ़ते हैं, किसी भी book से आप पढ़ते हैं तो आपको information मिलता है. This is mentioned in the constitution in article 3. But I am just discussing this to ensure that you are clear with this. Okay? Judgment of Supreme Court has been given on this article to interpret certain provision. Okay? So दो चीजें लिखी हुई हैं. President will give prior recommendation before the bill is presented for reorganization of the state. And second is कि उसको पार्लियामेंट में भेजने के पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे? Whatever state is being affected by the reorganization, president will take the opinion of that state legislature and then it will go to the parliament. So what was the important question in case of Jammu and Kashmir? In Jammu and Kashmir, the legislature of Jammu and Kashmir was not present because वहां presence rule था और assembly को dissolve कर दिया गया था. The assembly of Jammu and Kashmir was dissolved, so there was no assembly. So assembly के behalf पे opinion किसने दिया? Who gave the opinion in case of Jammu and Kashmir?
पार्लियामेंट. सो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ. व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस मैटर? व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डू? It was required from the Supreme Court to give an answer that could Parliament give its opinion when the state was not having an assembly. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? That when the assembly is dissolved, the Parliament can also give its opinion with respect to reorganization, because when present rule is in place under Article 356, who has the legislative power of the state? Article 357 very clearly says that the state legislature's powers they will be transferred to the parliament. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अगर लेजिस्लेचर की लॉ बनाने की पावर है, तो लॉ बनाने के अलावा और भी जो पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर के पास है वो सारे पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं. So if the parliament has got the powers to make a law for the state assembly, in case assembly is dissolved during president's rule, the parliament will also have all the other non-legislative powers which the assembly has. This is what the Supreme Court has concluded. So because of this interpretation, it becomes clear that in case the state legislature was not there, Parliament was competent to give its own opinion on the matter. So इसीलिए ये प्रोसीजर जो यूज किया गया जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने के लिए, it was upheld by Supreme Court. It was held to be valid. ठीक है, so you can just write over here one important line. This is very important. ये आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है अगर जजमेंट का रेफरेंस देकर पूछा जाए. ठीक है, so you can write down. The Supreme Court has held that the Supreme Court has held that the Parliament shall have the other powers of the state legislature apart from its legislative powers during president's rule under Article 356. During president's rule under Article 356. Thus the reorganization of Jammu and Kashmir into two UTs under Article 3 was upheld by Supreme Court. Under Article 3 was upheld by Supreme Court. यहां तक क्लियर हो गया सबको? आर्टिकल 2 में टर्म यूज किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. ठीक है, आर्टिकल 2 नॉर्मली जो आर्टिकल है उसका कंसेप्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 2? इट इज टू बी यूज फॉर अक्वायर्ड टेरिटरी. कोई टेरिटरी पहली बार इंडिया में मिलाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 2 यूज होता है. आर्टिकल 3 इज यूज्ड फॉर टेरिटरीज विच आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर चेंजिंग देयर स्टेटस इन टर्म्स ऑफ यूटीज एंड स्टेट्स. ठीक है, सो प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. लीगली जो वर्ड यूज किया गया वो आर्टिकल 2 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट यूज किया गया. ठीक है, अदरवाइज उसका कोई डिफरेंस नहीं है.